दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। ओके, एस माइनस एल टी आर जावा, ये 16 नवाइट का तो है। ठीक है, और सारा एक्सेस राइट्स भी है इसके ऊपर। यहाँ पे देखते हैं ये करके। डिप्लॉयमेंट फेल्ड इंसेस डिप्लॉयमेंट फॉर इन केस दिस फेल्ड डिप्लॉयमेंट आईडी because the worker process failed to start within allotment time। अच्छा, कुछ तो गड़बड़ है। ये एरर कुछ काम दे सकता है। The error strongly suggests your container or app is starting, but Spring Boot crashes before Azure health check succeeds. Okay. For Spring Boot on Azure Linux, most common causes wrong startup command app crashes due to DB per connection pooling, old at mm, old app application inside dependency incompatible. Your POM makes 5 highly likable. First thing to do, open your OK logs, which is this one. Look for lines। It could be that ये बोल रहा है कि अपना। ओके, ये लॉग देखते हैं। लॉग ऐप लॉगर्स के अंदर है। ओल्ड डिपेंडेंसी के चलते भी हो सकता है। स्टार्टअप लॉग्स यहाँ पे हो गया। मशीन लॉग्स। देखते हैं इसको एक्सेस करके। एप्लीकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है लग रहा है मुझे। तो एक काम करते हैं, स्प्रिंग स्टार्टर वहां से जाके फ्रेश स्प्रिंग इनिशियलाइजर डाउनलोड कर लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर नाउ। इसमें बस हेलो वर्ल्ड रहेगा और कुछ नहीं रहेगा अभी। ग्रूवी की जगह मेवन। कभी कभी ऐसा भी होता है, जार डिपेंडेंसी ओल्ड वगैरह होने से प्रॉब्लम्स आते हैं। इट्स फाइन, उसको भी फिक्स कर सकते हैं हम।
और एक और बड़ा काम जो होता है एज अ बैकएंड डेवलपर दैट यू डू इज, ऐसे कभी कभी प्रोजेक्ट्स पुराने हो जाते हैं, दे बिकम ऑब्सोलीट, ओल्ड, तो जार प्रॉब्लम्स आते हैं, बिल्ड फेलियर होते रहता है। देयर व्हाट यू हैव टू डू इज, you have to fix those all those jars. You have to make them up to the newest level so that they get built and deployed successfully. तो वो करना पड़ता है। तो एज अ बैकएंड डेवलपर, दिस विल बी ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कैसे करते हैं, एक एक जार चेक करोगे कौन सा कंपेटेबल नहीं है, जिसके चलते इशू आ रहा है, error आ रहा है, उसको उसका लेटेस्ट जार ढूंढोगे, अपग्रेड करोगे। सेम सबके लिए डिपेंड करने के बाद कंपाइलेशन एरर सब जाना चाहिए, फिर उसके बाद रन टाइम एरर सब जाना चाहिए। जो उसका रूल है, को पायलट के थ्रू से अब जल्दी हो जाता है, बट स्टिल यू शुड नो हाउ टू डू दैट। अभी इसमें हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर बना लेंगे, या हेल्थ कंट्रोलर पेस्ट कर देंगे अभी के लिए। यहाँ से हेल्थ कंट्रोलर को, इतना नहीं चाहिए था, बस सिंपल चाहिए हमें। ये जावा है, ये स्प्रिंग बूट में जैसे लिखते हैं सौरभ, तुमको अगर नहीं पता हो तो, बट ये सीखना है तुम्हें। मेक श्योर कि उस इसको भी सीखो। यस सर। स्प्रिंग बूट अभी डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर रहे हैं, बट ये अब हम जैसे नेक्स्ट जेएस में बनाते हैं ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, वैसे बनाते हैं एक्सप्रेस जेएस में। सेम यहाँ हम्म, पे स्प्रिंग बूट है, जिससे तुम गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग, एनोटेशन अगर डाल दोगे तो वो तुम्हारा वो रेस्ट कंट्रोलर सब बन जाता है। यहाँ लोकल प्रोफाइल में कुछ भी नहीं है, चलेगा। प्रोफाइल्स पर कुछ नहीं कर रहे हैं। लेट्स वेट फॉर दिस टू कंप्लीट। मीनवाइल अभी बहुत चीज कर सकते थे हम। सेटअप लॉग, सक्सेस फेलियर लॉग्स।
आ गया। स्टार्टअप लॉक्स। एरर क्या है देखते हैं। लाइट स्टार्टअप में जावा ऑन ऐप सर्विस, नो फाइल्स फाउंड। जावा हिप फेलियर क्यों हो रहा है? कंटेनर डिड नॉट स्टार्ट विद एक्सपेक्टेड टाइम। ओके, ये रहा, दिस इज द एरर। So you also have this responsibility to check all this error. How you will find the error and then try to solve this. No command defined, no startup available. Startup command is this, no startup file available, no startup command defined. That is fine, but then jar यहाँ पे है, तो उसको प्रॉब्लम क्या हुआ? Let's ask ChatGPT. Okay, it is asking to log in now. Check कहाँ पे लॉगिन था ये? वेट, अभी देखते हैं क्या होता है इसका एरर। मीनवाइल ये हो गया इंडेक्सिंग, फाइन, करने दो इंडेक्सिंग। No manifest file in Java home app.jar. Also, the manifest file in Java does not. Okay, this means that you deployed app.jar, not an executable jar. Azure App Service is trying to run. Okay, but the jar does not contain main class. Okay, root cause. Recommended solution: executable jar. Inside build plugins, put this. Build the jar properly.
फॉर्म फिक्स। ओके, प्लगइन देखते हैं एक बार। जावा 21। यहाँ जावा 21 है। वहाँ क्या है? जावा 21। ओके ओके। एक काम करते हैं, अपना इसको जावा 21 में कन्वर्ट करके देखते हैं। लोकल में जावा 17 नहीं है। ऐप सर्विस, टैग सेटिंग्स, लेट्स चेंज दिस टू जावा 21। सेव। इट्स अपडेटिंग द सेटिंग्स। और यहाँ पे ये ऐप डॉट नेम हटा देते हैं, वो कह रहे हैं नॉट रिक्वायर्ड। पैकेजिंग जार तो होना ही चाहिए। पैकेजिंग एस जार। करेक्ट। देन जावा मेवन, जावा स्प्रिंग बूट मेवन प्लगइन। स्प्रिंग बूट मेवन प्लगइन। ये भी नहीं चाहिए। जस्ट ये प्लगइन डालना है। देन क्लीन। ओके। टारगेट डिप्लॉय ओनली टारगेट ऐप जार, नॉट ओरिजिनल। लेट्स सी दिस वन। रीनेम। कंट्रोल A, कंट्रोल C।
स्टेटस बिल्ड सक्सेसफुल अब बोला। पहले यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल आया था 1 सेकंड में, ओके। 18 सेकंड में स्टार्टिंग द साइट कर रहा था। देखते हैं अभी क्या होता है। आगे चलिए। एप्लीकेशन इज नाउ अप एंड रनिंग। अंडरस्टूड व्हाट वाज द प्रॉब्लम? हेलो। 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 Hello. Yes, sir. The problem was in my local machine. This jar was compiling in Java 21, and on the server I have given Java 17. 70. It's so it was a configuration compilation configuration mismatch. So when we change in local and also there, then it started to run. अभी ये चलने लग गया। अभी अपना एपीआई भी चलेगा। एपीआई जो है लोकल होस्ट वगैरह वगैरह जो भी था, तो उसके लिए अभी हम फ्रंट एंड डिप्लॉय करेंगे। फ्रंट एंड के लिए एक दूसरा ऐप सर्विस बनाएंगे। चल रहा है अभी भी। हाँ, ये चल रहा है। ये सब नीचे है। फॉर Hello. फ्रंट। यस। So before deploying it in the app service, we have to do Maven clean install यस वी and हैव get टू। configured jar file. यस यू हैव टू डू दैट, अदरवाइज इट विल नॉट बिल्ड। यू हैव टू गेट द लेटेस्ट जार। But more, the problem was Java mismatch. In local, I was compiling with Java 21, and on the server, it was having Java Java 7. 17. So I have to change that. So here now stack is Java 21. Okay. Uh, और बाकी startup command, this or if you copy paste these commands, this will work. So Java demo is not required now. These commands, if you take copy paste, they will work. Now we will do the same for. What I couldn't understand, set the app service config. So it's the configuration file that we create on Spring Boot. No, this is nothing on Spring Boot. It's a app settings here. These are the configurations, right? So here, if we want to set up some environment variables, what value it should pick. All those we can set it here. He can here we can see those also. Instances. Wait, there should be a
app settings, app service plan, because we are setting on what? App service plan level. Where is that? Web app service, app settings, source group. No, this is on the app service. So we can also ask where can we find this? Usually it should be in, it is set up in the app service level. Na? So app service, properties, deployment center. Says नहीं, यहाँ पे नहीं है. This is not here. Wait, settings. Yes, here it is. So I have to set up app service profile, right? The Spring Boot profile, which is local, then port 8080. These values needs to be passed from somewhere, right? Our Spring Boot in the properties file here in the local properties file. First, we have to tell it this, what is these two values. If we don't give, it will pick up local by default and 8080 by default. But what if I want to run my Spring Boot? If I want to run the same application in, let's say, acceptance profile, or let's say production profile, then how will I run it? I have to pass, let's say I have to run it in Azure profile. So this value should be Azure, right? When I will run it in acceptance. So without changing anything in the code, while running this command, when you will deploy the same application into acceptance, you run this command with different values of here as acceptance. So it will pick up that acceptance profile, and in this acceptance, you put your SQL database or whatever database details. Is it clear? Yes. So this is how you run multi-profile application. So there we have to put the values one by one, whatever is there in the YAML file. Yes. Next is we have to go for. For that, we can write a bicep script. Suppose we are running that application in multiple profiles. Suppose See, there are 12. we will come to bicep template. Everything what we are doing now, we should not do with CLI. Everything we will write bicep template. But for now, let's say we don't know bicep template. So how we will do that? This is the way by Azure CLI. Or you directly come here and create it here manually. Uh, do we know a biceps template now? No, right? First we'll learn that one, then we will create. Meanwhile, what we will do? Either we go and create it here manually by adding plus new key value pair. Otherwise, we run this command, Azure CLI command. Is it clear? Yeah. जब पढ़ोगे तब अप्लाई करोगे, अभी तो आता ही नहीं है तो कहाँ से अप्लाई करेंगे? Then now React JS app service command. Same, it's similar to what we did. First, we will create a resource group. Our resource group is already there. Then we will basically in local do npm run build. So now we are here. For front end, we will go to front end project. We already did npm install already we did. So no need to do npm install to install the dependencies.
But first you have to do what? npm I. So there also I will update the command. Then you follow this. Similarly here, make sure to run npm install, then npm run build. So here, if I go now, npm I or npm install, anything is fine. So it will say all the dependencies are already installed. So that's it will not give me a problem. Then I have to run npm run build. When I run npm run build, here in the somewhere here it will create a what? It will create basically a dist folder or a build folder in which I can get all my files that I can upload. So again, commands are same. We'll copy this step 1 to 5 here. Copy. So it is creating build folder. In this, it will put all the resources. So I will say this is a resource group already created, app service plan. So this is the app service plan. It's already created. Then we'll get the app service. I'll make this as FE. And this one we need what? We need Node.js now. Because this is a, we can create another, completely another app service plan also for this, or use this one only. It's up to us. So runtime, let's use Node 21 LTS, long-term support. And then config settings. If we have any settings that we want to go with. Here we have to give, this will be the FE. And here, do we have any configuration? Here we have app settings, web app, and we will just set what? Name, which is this, resource group, which is this, and we don't have anything related to Java, memory, and all those things. All those not required. We have to give our startup file where it is loaded. Startup file. And here we'll run it in 2000, 3000, sorry. Then we will deploy it like we deploy React.
So this is our web app deploy resource group. This is the resource group name. This is the app service that will run it. Then we have source path. We have to create a zip first. Let's say here I will create a build. Inside build folder, I'll create everything as zip. React build dot zip. And then I will say type jar. In this case, it's type zip file because we are uploading the zip content. And then let's go and check what happened here. The build was successful. CLS. So we go to CD build ls or dir. So we see it has created many files already. So static files, sub files are also there. So we have to now let's go ahead and create run each command. This app service plan is there, so we'll not run this. From here we will run the command. Let's be here. So it is running that command now. Meanwhile, what we'll do is we'll come inside this folder. Right click and say send to compress zip and rename it to react hyphen whatever name we gave build dot zip. This is the name we gave in our command here build folder react hyphen build dot zip. So now let's see.